I will discuss with you the references also. 15 years, reference is 15 years. मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के आखिरी 15 साल जो 1918 से 33 तक, इसको 15 years कहा जाता है. The reference is to last phase of Chips' life, the period from 1918, this final retirement, to 1933, his death. Riviera. ये रेफरेंस जो Riviera is a strip of coast of northern Italy and southern France, between mountains and the Mediterranean. It is famous for its beauty, fertility, and mild climate. There are numerous holiday resorts in this era. यानी फ्रांस और इटली के दरमियान इलाका जो मतदल मौसम और खूबसूरत मनासर की वजह से सियाहत का मरकज़ बन गया था. League of Nations. League of Nations was the forerunner of the United Nations organization. It was the association of self-governing states, colonies, and dominions for the purpose of promoting international cooperation in maintaining peace. पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस का वजूद अमल में आया था और इसका मकसद बाहमी इख्तलाफात पर पुरअमन हल को तलाश करना था. द पोस्ट वॉर डिकेड. After the destruction of the First World War, attempts were being made to search more peaceful means to settle disputes. But even then, the decade that followed the war was marked by military aggression in different parts of the world. यानी पहली जंग अज़ीम के बाद शौरी कोशिश की गई कि कहीं भी जंग ना छिड़े, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में फौजी तसादुम हुए. The Ruhr is a river of western Germany. Around it is the area famous for coal mines. This area is famous for iron, steel, and other heavy industries. In 1921, the Allies invaded the Ruhr area because Germany had not paid the indemnity. Indemnity तावान को कहते हैं. 1921 में तावान जंग अदा न करने पर इत्तेहादियों ने रोर के सनती इलाके पर हमला कर दिया था. चंक और Kankel is the Turkish name for the Dardanelles. It is a start between Asian Turkey and the Gallipoli Peninsula, yani Jazira Numa Peninsula of European Turkey. It connects the Aegean Sea and the Sea of Marmara. In 1922, rebel Turks made a move to reoccupy the Dardanelles neutral zone. It was protected by a small British force. तुर्की के एक तनकनाएं जिस पर 1922 में तुर्क बागी हमलावर हुए. कोर्फू or Kerkyria is a Greek island in the Ionian Sea. In 1923, there were some boundary disputes between Italy and Greece. As a result of the murder of an Italian boundary delegations, Italian forces bombarded and held Corfu for a brief period. यानी जजीरा कोर्फू यूनान का बहुत खूबसूरत मकाम है. यहाँ सरहदी तनाज़े की वजह से 1923 में इटली ने कब्ज़ा कर लिया था. The general strike of 1926 in the history of Great Britain. For the first time, there was general strike. It continued for 9 years. Coal mines, railway and train system, docks and iron and steel works were all paralyzed. यानी 3 मई 1926 को बरतानिया में बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई जो 12 मई तक जारी रही. तमाम शोबों में ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई थी. Gilt edge stocks. The term came from the government stock printed on gilt-edged paper. Gilt-edged stock is the stock of the finest quality which is not affected by market functions because it is secured. Gilt-edged stock
कारोबार की ऐसी महसूस किस्म है कि स्टॉक मार्केट में मंदी रहने के बावजूद भी ये शेयर्स खसारे से महफूज रहते हैं। स्लम्प इज़ द अपोजिट ऑफ boom. Literally, it means to go down. In 1929, the New York Stock Exchange crashed. The value of stock dropped by 80%. It caused the greatest economic slump in the history of the Western world. It is known as the Great Depression. Hoover. In 1929, the New York Stock Exchange crashed and it gave the American economy a very bad shock. Hoover was the American president at the time. He announced an aid package to stimulate the economy. यानी 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की वजह से अमेरिकी माशत तबाह होगी। इस वक्त के अमरीकी सदर ने इसे संभालने के लिए इकदाम किए थे। वर्ल्ड लिटरेचर On October 6, 1927 came the world's first talking movie. The jazz singer with the trend of cinema changed. World literature was a projector type device. This organ showed the motion picture along with the sound. It came to Brookfield in 1932. Perhaps अक्टूबर 1927 में दुनिया की पहली फिल्म बनी जिसमें आवाज़ भी सुनाई देती थी। वर्ल्डजर एक मशीन थी जो ऐसी फिल्में चलाती थी। सॉसेज इज़ द sausage is the minced meat that is seasoned and stuffed into long cylindrical cases made from intestine. भुना हुआ कीमा जानवर की आंत में डालकर रोल बनते हैं। ठीक है। एंड वन रेफरेंस दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इन उर्दू, स्लम्प। 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में इस कदर मंदे का रुझान रहा कि शेयर की कीमत तकरीबन 80% कम हो गई। इससे पूरे मगरबी ममालिक में मुआशी अबतरी की कैफियत हो गई थी। Okay, beta, I have told you all the references that are discussed that are in this chapter number 16 of Goodbye Mr. Chips. Allah Hafiz.